Hello students, the question is assertion. Equal amount of positive and negative charges are distributed uniformly on two halves of a thin circular ring as shown in figure. The resultant electric field at the center O of the ring is along OC, and the reason is it is because the net potential at O is not zero. So this is assertion and reasoning based problem based on the topic electric field and potential. A particular situation is given. For example, a ring is given, and in this particular ring, this half, the upper half, is having the positive charge uniformly distributed, and in the lower section, there is negative charge which is uniformly distributed, and they are equal also. For it means that the positive total charge is equal to the total negative charge, and it is uniformly distributed. Now, in the assertion, it is said that the resultant electric field at the center O of the ring is along OC. We have to check this statement. It is said in this statement that the field at O means at this point, the resultant or means the net field at this point is along OC. OC means O to C, along this direction. So, this is the assertion statement and we have to verify it. Now, to verify it, first of all, we consider this upper half section. So for this particular upper half section, if we take a small segment here of charge, very small segment of charge here, and calculate the electric field at point O due to this segment by joining this particular line. Now this is the positive charge, and due to the positive charge, the electric field is away from the charge. So the electric field is in this direction. The electric field corresponding to this small element is in this direction. Similarly, at the symmetrical position with respect to this line, OA line symmetrically at this particular end, for example, from A to this distance and from A to this distance, these are equal and the charge is also equal. Then corresponding to this small segment, which is the, we can say the mirror image of this particular charge. Suppose if we place a mirror here, then this is the mirror image. The location is the mirror image. So we join this line here to O and we get the electric field as this. This is the electric field corresponding to the small segment, small section. Now the resultant of these two fields, for example, this field, for example, we call it as E1 and this as E2. So E1 and E2, the resultant is along the OC direction because this particular component of E2 and this particular component of E1, they are equal and opposite and they cancel out. The only remaining component is along OC. Similarly, if we take another small segment like this, so corresponding to this small segment, there is a segment like here, which is at the same distance from A. And in the similar manner as we have done earlier, we calculate the field for this segment as well as this segment. So in this way, we can see that the net field is also along OC direction. So we can certainly say that whenever we take a small segment in a subsection like AD or AB and we find the mirror image of that particular segment. So when we calculate the electric field at O due to these two segments, then the electric field is such that these two electric field components are such that the net is along OC. This particular component along OB and OD, it cancels out. So for the whole semicircular part of this ring, we can say certainly that the net field is along OC corresponding to this positive charge. In a similar manner, we can find out the field due to this particular segment, this particular part BCD, this arc. So for this particular section, if we take this small segment like this here, then corresponding to this particular segment, this is a negative charge. So for the negative charge, we know that the electric field is towards the charge. So this is the direction of the electric field due to this small segment. In a similar manner, if we take a mirror image of this charge segment here, so the field is along this direction, and equal in magnitude of this particular field, and the net is along OC.
because the component along OB and OD they cancel out. The reason being, as described earlier, the reason is same. So we can say that for this segment as well as this segment, the net field is along OC. In a similar manner, we take small subsections in the part of CD as well as CB, and we can see that their net effect is along OC. So in this way, we can say that the net field is always towards OC. So this is the explanation or the reasoning that the symmetry of this particular problem, uh, we can state that the net is along OC. So assertion is true. We can say that assertion is true. Assertion is true. Assertion. Assertion is true here. Now let us see the reason here. Reason is given as it is because the net potential at O is not zero. The reason is totally wrong because the net potential at O is zero. Because the potential is a scalar quantity and it depends upon the charge. So for suppose if we take a small charge here, so corresponding to this particular charge there is an equal and opposite charge here, and at the center the net potential becomes zero because the total net charge which is positive is equal to the total net charge which is negative. So in this way potential is zero. So here potential is zero at the point O, whereas the electric field is along OC. So the statement which is written over here is it is because the net potential is not zero is incorrect. First of all, it is an incorrect statement, and second, it is not the explanation in any way with the assertion. So assertion is true, but the reason is false. But the reason is false. So in this way, we can say that option C is correct here. For assertion reasoning based problem, if the assertion is true but the reason is false, then we have to choose the C option. So यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से. इसमें एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है और सर्कुलर रिंग के एक हाफ में पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है और दूसरे हाफ में नेगेटिव चार्ज जो है प्लेस किया गया है. इक्वल भी है दोनों चार्जेस ये और अपोजिट तो हैं ही, प्लस और माइनस रेस्पेक्टिवली. तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो रिजल्टेंट फील्ड होगा ओ पॉइंट पे इन पूरे रिंग के सेक्शंस की वजह से वो अलोंग ओसी होगा, ओ से सी की तरफ होगा. तो इसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी है. तो इसकी वैलिडिटी के लिए हमने क्या किया, हमने पर्टिकुलर सर्कुलर रिंग में एक छोटा सा सेक्शन लिया, यहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज का एक सेक्शन लिया और उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड निकाला. तो फील्ड अवे होगा एट द पॉइंट ओ, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक इतने ही इसके मिरर इमेज पे कोई पॉइंट हमने ले लिया, उतना ही सेगमेंट हमने ले लिया, तो उतना ही चार्ज ले लिया. उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग भी हमने वो पॉइंट पे फील्ड निकाला, तो फुल फील्ड कुछ इस दिशा में होगा. एक वेक्टर हमारा इस दिशा में है, एक वेक्टर इस दिशा में है, तो जो नेट होगा वो इस दिशा में होगा, ओसी के अलोंग होगा. इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे एक सेगमेंट लिया होता तो उसके बिल्कुल मिरर इमेज पे यहाँ एक सेगमेंट होता, उसकी वजह से जो फील्ड्स होते उनका नेट भी अलोंग ओसी होता. इस तरह से पूरे रिंग को हम जो है कवर अप कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जो नेट फील्ड है ओसी के अलोंग रहेगा. तो ये सेमी सर्कुलर सेक्शन इसकी बात की जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज था. नेगेटिव चार्ज वाले सेगमेंट के लिए अगर हम देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक हमने छोटा सेगमेंट लिया, उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर चार्ज सेक्शन होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है. और नेगेटिव चार्ज ठीक इसकी मिरर इमेज पे हमने यहाँ ले लिया सेक्शन छोटा सा, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. इन दोनों का जो नेट होगा वो अलोंग ओसी होगा. इसी तरह से हम कवर अप कर सकते हैं पूरे सेगमेंट्स को और देखेंगे कि जो लोअर हाफ है, नेगेटिव हाफ है रिंग का, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज प्लेस किया गया है, उसकी वजह से भी फील्ड की जो नेट डायरेक्शन है वो ओसी के अलोंग होगी. दोनों ही डायरेक्शन पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग भी सेमी सर्कुलर सेक्शन और नेगेटिव सेमी सर्कुलर सेक्शन के करस्पॉन्डिंग ओसी की तरफ ही है. तो जो नेट होगा वो ओसी के अलोंग ही होगा. तो हम कह सकते हैं कि असर्शन हमारा ट्रू है. द असर्शन इज ट्रू. रीजन जो दिया गया है उसके लिए वो बिल्कुल गलत है क्योंकि कहा गया है कि नेट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा ओ पे. तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होगा. द रीजन बीइंग पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज की जो दूरी है ओ से उन छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में अगर हम ब्रेकअप करके देखें तो दूरी बिल्कुल बराबर है क्योंकि वो रेडियस के बराबर है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज है और नेट नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा ओ पॉइंट पे वो जीरो होगा. तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है. तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.